Assalamu alaikum 10th class. Today we will do the poem Rain by W.H. Davies. W.H. Davies' favorite themes are nature and the hardships of the poor. This poem also has symbolic meaning. The upper leaves get the raindrops and quench their thirst. Afterwards they pass on the drops to the lower leaves. Here the poet uses the metaphor. This metaphor means that the rich get a golden chance first and whatever remains trickle down to the poor people. But the poor hopes that there would be equality in the society, just like the sunshine which spreads all over the world equally. And this sunshine is both for the dark brown drop of the rain and rich green leaves. I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on the top, giving the poor beneath drop after drop. 'Tis a sweet noise to hear these green leaves drinking water. I hear leaves drinking water. The poet here says that he hears the sound of falling rain on the leaves, and I hear rich leaves on the top. The poet says that sound is like that the drops leaves are drinking the rainwater, and the top leaves are getting the rain in plenty. Therefore, they are rich. And drop after drop, they are passing it to the lower leaves. Here it is. Here a metaphor is used that rich people are getting benefit, and what the left is they are passing to the poor people. It looks that as the rich people are giving alms to the poor people. 'Tis a sweet noise to hear, and the falling of rain on the leaves produces a music, gives a pleasant sound effect. These green leaves drinking water. The music produced by the falling rain on the leaves is soft and sweet, and the poet is enjoying what he is hearing. The rainwater is falling drop by drop on the top leaves, passing to the lower leaves. Poet जो अपर लीव्स को जो दे रहे हैं रिच पीपल से कंसिडर कर रहा है कि अमीर लोग दे रहे हैं, दे आर एट द टॉप, उनका देने वाला हाथ है, और नीचे वाले लीव्स जो हैं गरीबों की तरह उनसे खैरात ले रहे हैं, वो उनको जो अनायत कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने हाथ फैलाया हुआ है. मेटाफर यूज़ किया है, सोसाइटी का कंपैरिजन रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे उसने कि दरख्त जो नेचर की एक नेचुरल चीज़ है, कुदरत की बनाई हुई, वो भी उसने अपनी इमेजरी के अकॉर्डिंगली सोसाइटी से रिप्रेजेंट कर दिया है कि ऊपर वाले लीव्स जो भी चीज़ अल्लाह की तरफ से आती है, धूप आती है, रोशनी आती है, बारिश आती है, क्योंकि इस वक्त वो स्पेसिफिकली बारिश की बात कर रहा है, तो जो ड्रॉप्स आ रहे हैं पहले वो लेके अपनी प्यास बुझाते हैं, उसके बाद जो उनसे जो बच जाता है वो नीचे कतरा कतरा नीचे वाले गरीबों को देना शुरू करते हैं. And when the sun comes out, after the rain stop, a wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright. It will give a lovely sight. And first comparison कर रहा है रिच एंड पुअर का सोसाइटी का, देन उसके बाद वो एक होप दे रहा है लोगों को. आफ्टर द रेन हैज स्टॉप, द सन विल अपीयर, देयर विल बी ब्राइटनेस एवरीवेयर, एंड द सनशाइन विल स्प्रेड एवरीवेयर. It will not discriminate that the sun will light go to poor first or rich first. There is a hope that it will make the whole atmosphere lovely and bright, and the dark round drops of water will begin to shine in the bright rays of the sunlight.
The sunlight will illuminate the everything with its brilliant, and it will indeed a lovely sight. फर्स्ट पोएट ने हमें कंपैरिजन दिया रिच एंड पुअर का, और अगेन एक होप दे रहा है कि आफ्टर डार्कनेस, आफ्टर द रेन, sunshine will come out. There will be a hope for the poor. There will be a sunlight in the atmosphere जो उसको सारे को ब्राइटन कर देगा, उसको सारे को चमका देगा. इसी तरह गरीबों के लिए भी उम्मीद, नाउमीदी के बाद उम्मीद है कि वो जब वो भी उस एफर्ट करने से जो चीज़ अचीव कर रहे हैं हायर एलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी, उस तक वो भी जा सकते हैं. तो ही इज़ यूजिंग अ मेटाफर ऑफ रेन एंड द सनलाइट. उससे वो चीज़ों को, इमेजरी को हमारे सामने क्लियर कर रहा है. कम टू द क्वेश्चन, बॉक्स क्वेश्चन. What do the rich and the poor leaves stand for? The rich leaves stand for the elite class of the society which is availing every facility, and the poor leaves stand for the people who are awaiting for their turn. Question number 2. Do you also like the sun coming out after rain, and why? Yes, I like the sun coming out after the rain because it fills every dark round drop and also gives hope to the society. Give antonyms of the given words: rich, poor, top, bottom, near, far, light, dark, bright, dim, noise, silence, lovely, ugly. Come to the synonyms, that is the E part of the question. Shine, illuminate, bright, gleaming, blazing, noise, sound, lovely, beautiful.